हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? Yes, sir. ओके, सो सक्षम से बात हो चुकी है मेरी एंड सम न्यू स्टूडेंट्स. मान्या, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? So Mon Barakamba. ओके, एंड व्हेन इज द एग्जाम ऑफ मैथ्स? मान्या, मैथ्स एग्जाम कब है? ऑन सॉरी युवराज, वॉइस ऑडिबल नहीं थी. कब एग्जाम? So 12th 12th March. 12th March. ओके. Yes, sir. ओके, ठीक है. एंड स्नेहा, स्नेहा मैथ्स एग्जाम कब है आपका? ओके, ठीक है. सो हाँ मानिया, हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे. सो वी आर डूइंग द कोनिक सेक्शन. ठीक है, कोनिक सेक्शन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. सो इन कोनिक सेक्शन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सर्कल, पैराबोला, एंड नाउ वी आर डूइंग द एलिप्स. तो हम एलिप्स स्टार्टिंग से करते हैं. ओके स्नेहा, ठीक है, थैंक यू. सो चैप्टर इज कोनिक सेक्शन. And in conic section, we have already completed circle, parabola. Now we are doing the ellipse. Okay. So please write the definition that what is the ellipse. It is the set of all the points. Set of all the points which are. It is a set of all the points whose sum of distance from two fixed points is always a constant. So we have this figure, this ellipse. And the definition is, it is a set of all the points whose sum of distance from two fixed points is always a constant. Suppose we have two fixed points. This is F2 and this is F1. So the definition is कि अगर हम एक point select करते हैं, suppose this one, and हम distance find करते हैं from F2 and F1, let this be A. And suppose AF2 plus AF1, you are getting 10. So it's mean अगर आप कोई और भी point select करेंगे like this, and you find the distance this, let this be C, then CF2 plus CF1, this is also equal to 10. Now similarly, if you take a point over here and you find the distance between these 2 points, let this be D, then again the sum of distance is 10. So this is the definition of ellipse. Okay? So what is the ellipse? It is a set of all the points whose sum of distance from two fixed points is always a constant. Okay, any doubt in this? Manya, Saksham, Sneha? No, sir. No, sir. Pratham and Yuvraj, questions try किए थे on conic section? No, sir. No? Okay.
ठीक है, आज प्लीज कीजिएगा। नो प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नोट होगी, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट? Yes, sir. Okay. Now, we have this ellipse और हमने definition में क्या, it is the set of all the points whose sum of distance from two fixed point is a constant. So this is f2, this is f1. Now these two fixed points जहाँ से हम distance find करते हैं, these two fixed points are called these two fixed points are called chi of the ellipse. This is what, this is a plural of focus. Plural of focus. Okay. So these two fixed points are called the focus. Okay. Next is if we join these 2 points. If we join these 2 points and we find the middle point of this line. So we get a center. This is a center. So the definition is the midpoint of the line segment joining the is called the center. ठीक है, what is center? The midpoint of the line segment joining the foci is called the center. तो हमने इन दोनों को join किया, then we have find the midpoint. That midpoint is called the center. So it's mean this is center, and in this case this is origin. So NCERT में आपके पास जो भी topics हैं, in that the center is always at the origin. तो हम सिर्फ इतने ही questions करेंगे in which the center is at the origin. Okay. Now, please note on this. इसमें अगर कोई डाउट है प्लीज बता दीजिए। हाँ सक्षम, इतना क्लियर है सेंटर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज मेजर एक्सिस। प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट। Next one is major axis. The line segment through the
Okay, so next topic is major axis. This line which is passing through the focus, this line, this is called the major axis. This is major axis. Okay, so the line which passes through the focus is called the major axis. Next, we have a minor axis. The line segment perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis and passes through the center is called minor axis. So what's a minor axis? The line which passes through the center and perpendicular to the major axis. There is a major axis. So this line is perpendicular to major axis and passes through the center. So this is the minor axis. Okay, any doubt till now? Manya? No, sir. Okay, please note down this. Shall we start next? I guess सबने note कर लिया. Yes, sir. Okay. So now हमने focus discuss कर लिया, then we have discussed the major axis, then we have discussed the minor axis. Now this is a vertices. So vertex. Similarly, this is also a vertex. So what is a vertex? The point at which the ellipse cut the major axis is called the vertex. Okay, the point at which the ellipse cut the major axis. Major axis को जिस point पे cut कर रहा है, that is called the vertex. So in this case, this is the vertex. ठीक है, अब हम coordinates ले लेते हैं. So this is f1 and f2. तो इसके coordinates हम लेते हैं c, 0. So ये left side है, ये हो जाएगा -c, 0. Now similarly, ये vertex है, इसके हम coordinates लेते हैं a, 0 and this is -b, sorry,
minus a comma 0. Now this one is 0 comma b, and this is 0 comma minus b. Please note down this vertex and all these coordinates. I guess सबने note कर लिए. So we will start next. Next is length of major axis. Now, Saksham, this coordinate is a comma 0, this is minus a comma 0, and this is a major axis. ये complete major axis होती है. Now, what is the length of major axis? सर डिस्टेंस फॉर्मूला सर. Distance formula directly हम भी कह सकते हैं. ठीक है? This is origin. So this distance is what? Saksham, ये कितना होगा? A. सर ए. ये भी a ही होगा. यस सर. Distance तो एक ही होगा. तो complete distance कितना हो गया? 2a. 2a. So length of major axis is 2a. Now similarly, length of minor axis क्या होगा? G, Saksham. This is 0 comma b, this is 0 comma minus b. What is this 2b. complete? 2b. Length of minor axis is 2b. Now next is relation between A, B and C. ठीक, हमें पता है what is A, B and C. You have to find the relation between this. Okay, Manya, from in A, B and C, which is the greatest? A is greatest, B or C? Yuvraj, which is greatest? A, B or C? सर ए. A. A. A is greatest. So it's mean तो हम relation इसको ऐसे learn करेंगे that A square is equal to B square plus C square. ठीक है, एलिप्स के बाद नेक्स्ट आता है हाइपरबोला. उसमें फॉर्मूलेज जस्ट अपोजिट हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे ही लर्न करेंगे. अगर एलिप्स के फॉर्मूलेज आप लर्न कर लेते हैं. देखिए कोनिक सेक्शन में इशू क्या है? कोनिक सेक्शन इज नॉट अ टफ चैप्टर. इशू है कि इसमें फॉर्मूलेज काफी ज्यादा हैं. ठीक है, उसको आप डायरेक्टली लर्न नहीं कर सकते हैं. जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, आपने उसको लर्न किया है, एलिप्स में आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आप कहीं भी कंफ्यूज होंगे. सो एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों अपोजिट. तो जस्ट लर्न द फॉर्मूलेज ऑफ एलिप्स. ठीक है, ब्लाइंडली नहीं करना है, ग्राफ आपको समझना है. उसके बाद हाइपरबोला जो हम स्टार्ट करेंगे, हम सारे फॉर्मूलेज यहीं से ड्राइव कर लेंगे कि एलिप्स में ये था तो हाइपरबोला में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, सो द रिलेशन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. उसको लर्न कैसे करना है? चेक करना है कि विच इज द ग्रेटेस्ट. ए इज ग्रेटेस्ट, सो इट्स मीन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. सो ऐसा नहीं हो सकता दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर ऐसा होता देन बी विल बी ग्रेटर दैन ए, बट वो तो नहीं है. ए ग्रेटेस्ट है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. Next we have a term eccentricity. Eccentricity यहाँ भी होगा and in hyperbola हमें फिर करना है eccentricity. So eccentricity is denoted by E and this is equal to C by A. ठीक है, eccentricity is C by A. So we can define eccentricity like this. Eccentricity is the ratio of
is the ratio of the distance of focus from the center to the distance of vertex from the center. Okay. So eccentricity is the ratio of distance of focus from the center to the distance of vertex from the center. ठीक. So हम इसको learn करेंगे like this: E is equal to C by A. Similarly, hyperbola में same formula होगा, that E is equal to C by A. ठीक है. Any doubt till now? Next, बस एक last topic हमारे पास रह गया. Please note down this. फिर एक last topic करते हैं. So the first part of ellipse will be complete. Are done. Shall we start next? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. इसेंट्रिसिटी हमने कर लिया. बच्चे किसी ने नोट नहीं किया देन प्लीज बता दिएगा. This is F2, this is F1. Then we have one more topic, lattice vector. Lattice vector. What is a lattice vector? It is a line which passes through the focus and touches the ellipse. So lattice vector is a line which passes through the focus perpendicular to the major axis and touches the ellipse. So we can define the lattice vector like this. It is a line segment. It is a line segment which passes through the focus of perpendicular to the major axis and touches the ellipse. So what is a lattice vector? It's a line segment which passes through the focus perpendicular to the major axis and touches the ellipse. So this is a lattice vector. Let this be AB. Let this be CD. So here AB and CD is a lattice vector. Next we have a topic, length of lattice vector. Length of lattice vector, which is equal to 2b square by a. Okay. This is a lattice vector. We have to find that. If we have to find the length of this, then this is given by 2b square by a. Okay. Okay. Any doubt in this? Sakshanam, Sneha, Yuvraj, Manya, Pratham. No, sir. Okay, please note on this. इसके बाद एक समरी फॉर्म कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेस की जो हमने अभी देखी. Excuse me, sir. जी युवराज. Sir, how did we derive this formula? 2b square upon a. 2b square by a. युवराज ये आई गेस लास्ट क्लास में मैंने करवाया था. मैं फिर करवाता हूँ इसको. ठीक. Please note down this. प्लीज नोट कीजिए फिर मुझे बता दीजिए.
फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट. डन. स्टार्ट करें फिर. Now, this is a focus. युवराज, फोकस का हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया था? सर C, 0. C, 0. ठीक है. सो इफ वी आर सेलेक्टिंग दिस पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. सर C, a bit less than B. एंड हाँ, a bit less than b, but we don't know what is that. तो हम इसको कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं. सपोज हमने इसको l ले लिया. Yes sir. ठीक है युवराज. सो l का मतलब कितना हो जाएगा? l का मतलब दिस वन, दिस. The length along y-axis. Yes sir. ठीक है. सो अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं दिस वन CF1, देन सेम लेंथ ये भी हो जाएगी, जी सर. है ना. उसको ऐड कर देंगे, विल गेट द कंप्लीट लेंथ ऑफ द लैटिस वेक्टर. सर 2L हो गई. हाँ, अब हम देखते हैं, है ना. हाँ, 2L हो गई. बट हम देखते हैं कि व्हाट इज L. सो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया. ओके. नाउ द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, ये एक्चुअली मैं बाद में करवाना चाह रहा था. ओके. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ठीक है युवराज. जी सर. हमने पैराबोला किया था, हमने सर्किल किया था. सिमिलरली द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स इज दिस वन, x square by a square y square by b square is equal to 1. ये आपको बताया व्हाट इज a, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज a, एंड दिस वन इज b, है ना. हमें पता है दिस वाज a, 0 एंड दिस वाज 0, b. ठीक. नाउ इसके बाद this point C, L, this lie on this ellipse. Yes sir. ठीक है. सो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. जी सर. पॉइंट C, L लाइन फर्स्ट. ठीक. तो इसका मतलब C स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इसका मतलब L स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस C स्क्वायर बाय a स्क्वायर. It's mean L square by B square is equal to A square minus C square by A square. Now what is A square minus C square? हमने relation लिया था ना, that A is greatest, so the relation between A, B and C is this. तो C हम अगर यहाँ shift करते हैं युवराज, तो ये कितना हो जाएगा? A square minus C square is what? Sir A square minus C square is equal to B square. B square by A square. Yes sir. So L square is equal to B to the power 4 by A square. So it's mean L is equal to B square by A. Yes sir. So it's mean length of lattice rectum जो होगी, length of lattice rectum is equal to 2b square by a. ठीक है. This one is L, तो complete 2 हो जाएगा, 2b square by a. युवराज क्लियर हुआ था? Yes sir. ठीक है. Please note down this. ठीक है. स्टार्ट करें पे नेक्स्ट. नोट कर लिया युवराज? 1 minute sir. ओके. Done sir. ओके.
तो फिर एक समरी फॉर्म कर लेते हैं फॉर्मूलेस की. So first thing is we have this formula x square by a square plus y square by b square is equal to 1. तो in this case हमने सबसे पहले किया था foci. Now प्रथम, what are the foci in this case? प्रथम हमने जस्ट अभी किया था. foci क्या होगा for this one? प्रथम आप म्यूट में. युवराज, what is foci in this case? Sir, foci will be Okay. अपने डिस्कस किया था ना, these are the focus c, 0 and minus c, 0 ना. तो फोकाई कितना हो जाएगा? प्लस माइनस c, 0. okay, sir. So it is not related to the equation. It is related to equation. In this equation we have only a and b. Now what is c? C is a square minus b square. So in equation a, the value of a and b will be given and we have to calculate the c and then we have to find the focus. Okay, sir. Okay, now Saksham, what is vertex? Saksham, मेरी वॉइस minus a comma 0 and a comma 0. बिल्कुल ठीक है. प्लस माइनस a, 0. ठीक है. Then third is center. Now Mania, what is center in this Sir, case? 0,0. 0,0. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. ये जो हमारा ellipse है, this have the equation, this one, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now in this case the center is at the origin, so the coordinate is 0,0. Now after this we have the length of major axis. Length of major axis. So Sneha, what is length of major axis? बिल्कुल ठीक है. This is 2a. Next is length of minor axis. जी इसने, what is length of minor axis? 2b. बिल्कुल ठीक है. Now Pratham, what is eccentricity? So eccentricity E is equal to E is equal to 1 second, sir. okay. So c by a. C by. Next Pratham, what is length of lattice rectum? So lattice rectum. So 4a. नहीं, वो parabola में था. So अच्छा, oh sorry sir. 2b square by a. ठीक है. So for this one, for this standard equation, हमसे एग्जाम में वो ये सब पूछ सकते हैं. Find the focus, vertex, center, length, eccentricity or length of lattice rectum. Okay sir. Any doubt in this? No sir. Please note down this. उसके बाद हम start करते हैं next time.
जी, नोट हो गया? एक सेकंड सर। ओके। हो गया सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज we have this type of ellipse like this. ठीक है, here the major axis is on y axis. अगर हम बात करते हैं previous ellipse की, here the major axis is on x axis. In this ellipse the major axis is on y axis. ठीक है, so this have the equation x square by b square plus y square by a square is equal to 1. अब देखिए, ये जो फॉर्मुलेस हैं, डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट फॉर्मुलेस मिल जाएंगे, बट यू विल गेट द सेम आंसर। मेरा सजेशन है कि आप जब भी थ्योरी अगर रिवाइज कर रहे हैं और आप नोट्स रेफर नहीं कर रहे हैं, देन प्लीज रेफर द एनसीईआरटी। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्मुलेस हैं, आंसर सबके सेम आते हैं, बट आप कंफ्यूज होंगे। सो थ्योरी अगर रीड करिए, देन रेफर द एनसीईआरटी फॉर दिस चैप्टर। Okay, now we have this ellipse here, the major axis, ये अब major axis होगी, है ना? क्लियर है ना? पहले ये था, यहाँ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे था, यहाँ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे। सो दिस इज द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब देखिए हमने क्या करा कि लास्ट अगर हम फॉर्मूला चेक करते हैं तो लास्ट फॉर्मूला वाज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले ये फॉर्मूला था, अब क्या हुआ, ये इंटरचेंज हो गए। ठीक, तो अब देखते हैं फॉर्मुलेस पे क्या इफेक्ट होगा इसका। तो फिर फर्स्ट हम बात करते हैं फोकस की। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। पहले हमारा फोकस क्या था, प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? मुझे बताइए व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? युवराज, Yes, sir. व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? Sir, this would be plus C. Wait a second, sir. 0 comma plus C. दिस इज करेक्ट। ठीक है, 0 कॉमा प्लस सी एंड F2 इज So 0 comma minus c. 0 कॉमा माइनस सी। ठीक है, सो क्लियर हुआ F1 एंड F2। इसने मिस्टेक क्लियर हो गई। दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, देन वी हैव अ y कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, टेल मी दिस इज द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लास्ट से कंपेयर कीजिए। सर 0 कॉमा ए हम्म, एंड सर 0 कॉमा माइनस है। बिल्कुल ठीक है, 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा माइनस है। So these are called the vertices. This is a vertex and this is also vertex. So second हमारे पास point आ गया that the vertex this is at 0 comma plus minus a. ठीक है, please note on this.
सर इसमें बस हमने इलिप्स को y एक्सिस के अलोंग बना दिया, बस इतना ही फर्क है ना? जी युवराज। ठीक है, हाँ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज दिस इज सेंटर। प्रथम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर? प्रथम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर? सर 0,0. 0,0। ठीक है, next we have length of major axis. Mania, what is the length of major axis? Sir, 2A, 2a. And minor axis? 2B. 2b। ठीक है, लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेंथ फॉर्मूला जो भी हमारा पहले था एज इट इज सेम यहाँ रहेगा। 6, नेहा, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी क्या होगी? c बाय, बिल्कुल ठीक है। Seventh is length of lattice vector. Pratham, what is length of lattice vector? So length of lattice rectum would be, sir, 2a. 2b square by। So 2b square by. Lattice rectum यहाँ वही होगी। Lattice rectum क्या था? The line which passes through the focus and perpendicular to the major axis. So ये lattice rectum होगी। Yes, sir. ठीक है, so this is lattice vector. Please note down this. चलिए इसे कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वही समरी चेक करते हैं। सो सबका नोट हो गया था ना, किसी में मिस तो नहीं हुआ? नाउ सेकंड वी हैव दिस x square by b square plus y square by a square and this is equal to 1. We have this ellipse. So first is focus। ठीक, अब डिफरेंस क्या आ जाता है? पहले मेजर एक्सिस था हमारा ऑन एक्स एक्सिस, नाउ द मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। सो सिर्फ डिफरेंस क्या आया? 0, प्लस माइनस c हो गया, क्योंकि दिस पॉइंट लाई ऑन द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट वी हैव अ वर्टेक्स, तो ये है 0, प्लस माइनस a। ओके, थर्ड इज सेंटर, सेंटर विल रिमेन द सेम, 0, 0। फोर्थ इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम रहेगा, this is equal to 2a। Fifth, we have length of minor axis, length of minor axis, this is equal to 2b। Sixth, we have eccentricity, formula will remain the same। Seventh is length of lattice rectum, length of lattice rectum and this is equal to 2b square by a। तो अगर हम फॉर्मुलेस कुछ कंपेयर करते हैं तो सिर्फ डिफरेंस इतना आ रहा है कि फोकस पहले एक्स एक्सिस पे था, नाउ इट इज शिफ्टिंग टू वाई एक्सिस, तो वहाँ वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अदर देन दिस और द फॉर्मुलाज आर सेम। प्लीज नोट डाउन दिस। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज टाइप फर्स्ट।
and this one is type second. कंप्लीट हो गया सबका? स्टार्ट करें पे? Yes, sir. Okay. So next, मुझे बताइए, we have two types. ठीक है. Suppose we have a question, this x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. And we have this x square by 9 plus y square by 25 is equal to 1. Now, which one is type first and which one is type second? Sir, like we can Sir, वो तो sir, type डिपेंड करता है ना सर, क्योंकि is A हम first. क्या ले रहे हैं और B क्या ले रहे हैं. But we have the equation this सारी values हैं हमारे पास. So type first और type second कौन सा होना चाहिए? So first ये Type. होगा क्योंकि A बड़ा होगा सर. This is type first. Yes, sir. क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, या तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ए इज ग्रेटर दैन बी, तो हमने डिनोमिनेटर चेक किया, दिस पार्ट इज ग्रेटर दैन दिस, सो दिस इज टाइप फर्स्ट. ठीक है, युवराज क्लियर हुआ ये? Yes sir. ओके, नाउ सिमिलरली दिस वन, यहाँ वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर, सो दिस इज टाइप 2, टाइप सेकेंड. तो ऐसे चेक करना है एग्जाम में, जब भी आता है चेक ऐसे करना है, जो भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग. अगर x का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होगी, सो टाइप फर्स्ट हो गया. y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है देन द मेजर एक्सिस विल बी ऑन y एक्सिस, तो दिस वन इज टाइप सेकंड. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज find the coordinates of the Try this question. Find the coordinate of the focus, vertices, length of major axis, minor axis, lattice vector of this ellipse. बताइए मुझे words answer. Tell me the answer. मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे 1 by 1 आंसर्स बता दीजिए. युवराज फोकस बिल्कुल ठीक है.
मेजर एक्सिस इज 10, दिस इज 6, बिल्कुल ठीक है। एटीन बाय 5, बिल्कुल ठीक है युवराज। और सब प्लीज चेक कीजिए, मानिया, प्रथम, सक्षम, स्नेहा, आंसर चेक कीजिए, दीज आर करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके प्रथम, ओके मानिया, सक्षम, आंसर इज करेक्ट। Yes, sir. ठीक है। स्नेहा, स्नेहा सेम आंसर्स। स्नेहा सेम आंसर्स आ रहे। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज find the coordinates of the foci Next, try this question. 9x square plus 4y square is equal to 36. Find all the points. Any doubt in this question? This question is not in the standard form. है ना? 9x square plus. No, sir, no doubt. Okay. So, okay, Raj के answers भी आ गए. First is focus. So it is, Yuvraj, focus is 0 comma plus minus root 5. ठीक है, check it. So y-axis will be the major one, no? Y-axis will be the major one. Excuse me, sir. हाँ जी. सर इसमें हमारा a 1/9 आएगा और b 1/4 आएगा, राइट? नहीं नहीं नहीं. First of all, अगर हम standard equation की बात करते हैं, in the standard equation, in the right side we have always 1. सर मैंने ऐसे करा है कि मैंने सबको 36 से डिवाइड कर दिया. बिल्कुल ठीक है. This is Yes, correct. sir. है ना? क्योंकि हमारे राइट साइड में हमेशा 1 होता है, तो उसको जो आपने डिवाइड किया हुआ 36, दिस बिकम x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1.
ठीक है युवराज क्लियर हुआ Yes, sir. okay so compare अगर करते हैं this is b is equal to 2 and a is equal to 3 क्योंकि this one is greater फाइंड कर दीजिए c स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tell me next what this is So 0, root 5 बिल्कुल ठीक plus 0, plus minus root 5. plus minus sorry what is this 0 comma plus minus Root 5. root 5 ये तो focus हो जाएगा So 3. 3 So root 3. Okay. 3 only 3 because a Oh. square is 9 length of major axis 6 बिल्कुल ठीक है this is 4 बिल्कुल 4. eccentricity is what So root 5 by 3. नहीं eccentricity is So c by है ना तो c by बिल्कुल ठीक है root 5 by this is 3 3. बिल्कुल okay so Mania Sneha any doubt in this No, sir. okay okay Pratham को clear है section any doubt in this No, sir. no? okay next start करते हैं next is find the equation of the ellipse whose vertices are plus minus 13 comma 0 and plus minus 5 comma 0 ठीक है try this question So x square upon 13 plus y square upon 12 is equal to 1. x square by 13. square 13 square, yes. by y square by 12 12 square to is 1 equal to 1. बिल्कुल ठीक है this is correct प्रथम Okay, sir. युवराज बिल्कुल ठीक है ना स्क्वायर मिस हो गया एक अच्छा ठीक है युवराज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना सर वो फिर 132 लगता ना इसलिए मैंने डाला नहीं अच्छा 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 ठीक और किसी को डाउट है इसमें No, sir. ये स्टार्ट करें फिर मानिए Yes, sir. हाँ हो गया कंप्लीट Yes, sir. ओके ओके सो नेक्स्ट वन इसने यहाँ कंप्लीट हो गया ना ओके नाउ नेक्स्ट वन find the equation of the ellipse whose length of major axis whose length of major axis is 20 and chi r 0 comma plus minus 5 try this question
सर इसका आएगा सर x स्क्वायर अपॉन 75 बिल्कुल ठीक है। प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 100 बिल्कुल ठीक is equal to 1. है। This is the correct answer. और सब मुझे प्लीज बताइए, सबका सेम आंसर आ रहा है? मान्या प्रथम सेक्शन, सेम आ रहा है सर। ओके सेक्शन, और सब भी प्लीज। Sir, done. ओके स्नेहा, Yes, sir. okay, good. Now last question of this ellipse question is find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse with major axis along the x-axis and passing through the points 4,3 and -1,4. Okay, try this. Find the equation of the ellipse which major axis along x-axis and the ellipse is passing through the point 4,3 and -1,4. सबको क्लियर है स्टार्ट कैसे करना है? वैसे बच्चे इनको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। The ellipse is passing through these 2 points. For example, हमारे पास होता है x plus y is equal to 4. तो हम कहते हैं कि the line is passing through this point. इसका मतलब है ये point इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। Now similarly, if these 2 points lie on the ellipse, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। Excuse me, sir. हाँ जी युवराज। सर मेरा आ रहा है 15b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 15b square minus 7a a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके युवराज कैसे है ये? सर इस पहले x और y की वैल्यू डाल दी 4,3 के लिए. इक्वेशन ओके इक्वेशन ये होगी युवराज? यस सर, फर्स्ट टाइप वाली. फर्स्ट टाइप हो गया, फिर आपने ये पॉइंट्स पुट कर दिए, तो ये कितना हो गया 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड सर फिर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया. 16/b स्क्वायर. बट युवराज जैसे क्लास 10th में करते थे ना लीनियर इक्वेशन, सेम वैसे ही कर रहा है. सपोज हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 4 and we have 3x plus 2y is equal to 3. तो इसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते थे, कैसे करते थे पहले क्लास 10th में? सर वन वेरिएबल में लाके कोफिशिएंट सेम करते थे, ओके. है ना? तो सिमिलरली यहाँ भी कोई कोफिशिएंट सेम करना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए.
So this is second. You can multiply this second with 16. हो जाएगा वो. 1 मिनट दो सर कर रहा हूँ. Okay. किसी का कंप्लीट हुआ है? सर अजीब सा आंसर आया है. b is equal to 247 divided by 15 whole root. B is equal to 247 by 15. 15 whole root. Yes sir. बिल्कुल ठीक है. And what is it? सर a नहीं निकाला. ओके कीजिए. ठीक है, ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है इसका. 9 by b square is equal to 1, and when we multiply this with 16, तो ये आ जाएगा 16 by a square plus 256 by b square is equal to 16. Subtract these two, you will get the answer. और सब भी ट्राई कर रहे हैं ना? Yes, sir. ओके. सर 1 by a square plus 16 by b square is equal to 1. ए कितना है युवराज? सर तो इसमें 1 मिनट सर. ओके. So A is root 247 by 7. By 7, बिल्कुल ठीक है. And b is this. ठीक है. Now put these values in this equation. You will get a final equation. So the equation is x square by a square, it's mean 247 by 7 plus y square by b square 247 by 15 is equal to 1. और क्योंकि थोड़े से
कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस बिकम 7x² by 247 plus 15y² by 247 is equal to 1. Now what we will do, LCM लेके इसको शिफ्ट कर सकते हैं. 7x² plus 15y² is equal to 247. So this is our final answer. ठीक है, युवराज, प्रथम, सक्षम, स्नेहा, Yes, sir. सेम आंसर. ओके, स्नेहा सेम आंसर है. Okay, good. So this chapter, this ellipse is complete. So homework is try to complete exercise 11.3. ठीक है, मान्या एंड स्नेहा, हम सिर्फ एनसीईआरटी ही करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम है फ्रॉम 8th to 12th. सो इतना हमारे पास टाइम नहीं. सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी. ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, आज बस हम इतना ही करते हैं. कल से फिर थोड़ी सी हम और टाइमिंग इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. ठीक है, प्रथम